फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आज समथिंग आई वांट टू गिव or share a different thing on the aspect of life. Friends, a student means जब हम लोग कुछ सीखना चाहते हैं, whatever the age may be, age matter नहीं करता है. Learning should be there forever and ever, because if you learn in daily life, then you will get more opportunities, more towards your growth, and something different you will get every day. So friends, be a student of life. Life is a very happiest. It may be very difficult to somebody who is not accompanied with the life, the way of life, the way to live life. So means I want to relate something to this. जब फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल में रहा कॉलेज टाइम में, तो वहाँ का जो खाना बहुत मतलब इट वाज नॉट गुड इनफ टू टेक इनटेक, तो खाने में बहुत दिक्कत आता था. तो धीरे धीरे सिचुएशन ऐसा आया कि हम लोग खुद खाना बनाना सीख गए. तो इसमें क्या सीखते हैं, ये हमको सिखाता है कि कोई भी सिचुएशन हो तो खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू एडॉप्ट द सिचुएशन, व्हाट मे बी द सिचुएशन विल बी. सो फ्रेंड्स, धीरे धीरे खाना बनाना सीख गया. उसके बाद ऑटोमेटिकली द थिंग्स was going with me, because I learned from that situation. So where to take the food from others, why not we can cook ourselves like that. और एक बात हुआ था, जब MBA ख़त्म हुआ, why I would dependent for a job on somebody. This happened to me. And everyone, I think everyone has that expectations to get a job from in a shortcut way. So I also motivated from somebody that he will give me a job quickly. So I believed on him. Then I go to the place where he took me. उसके बाद झूठ बोल के वो मेरा मतलब मोबाइल, पैसा सब कुछ ले लिया. और 10 दिन तक उसके बाद उसका पता मतलब नहीं था. मैं फ़ोन भी लगाया, वो फ़ोन पिक भी नहीं किया. तो उस टाइम जो फीलिंग्स आया था वो मुझे मतलब लाइफ में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिला कि किसी के ऊपर इतना भी यकीन मत करो और शॉर्टकट में मत जाना कभी भी. ये जो जॉब के लिए मैंने शॉर्टकट चूज़ किया था कि वो मुझे जॉब दे देगा और मैं इजीली एक जॉब मुझे मिल जाएगा और मैं ऑलरेडी वाज डिपेंडेंट ऑन दैट. सो दैट वुड नॉट बी हैपन इन योर लाइफ. सो यू हैव टू चूज व्हाट योर हार्ट इज सेइंग, दैट इज इनसाइड यू. योर फीलिंग्स will give you the success. Your thought power, your ability, your capacity will give you the success. So I was dependent at that time, and from that situation I learned that do not believe somebody who will give you a shortcut way to get success. That will never happen, never ever happen. And from that situation I learned that do not believe somebody suddenly. You have to make research on them, that what he is saying, is it actually happen or not. So friends, दो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, expectations and comparison. That will give you very pain life, that you
get forever. So don't expect anything from everyone, and don't compare yourself with others. That will give you pain and sadness in your life. So if you want to happy, then be yourself and get the way perfectly by yourself. Don't depend on others to get something in your life. So be happy. Thank you, friends.